चलो write down new heading friends. Net operating income approach. In bracket I am writing NOI approach. In bracket I am writing without tax. ऐसा भी हम लोग नया पॉइंट समझने जा रहे हैं. Let us see this question and along with that we will understand. Company X and company Y are identical in all respect including the risk factors for debt and equity. X having issued 10% debentures of rupees 18,000, Y has issued only equity. Both the firms earn 20% before interest and taxes on their total assets of 30,000. Capitalization rate of 15% for an all equity company. Compute the value of the company X and company Y and overall cost of capital using NOI approach. That is a question. So the question is like providing the NOI approach, and we can see importantly that the tax information is not given. So let us see that's how to make the calculation of answer for company X and company Y. I want you to do answer for the company Y on your own first of all. Let us see that how to do answer friends. We start again with the EBIT. It is 30,000 into 20%. तो कितना आएगा 6,000 रुपए. Y is an unlevered firm, तो इंटरेस्ट का खर्चा कितना आएगा 0. उसके ऊपर से अर्निंग बिफोर टैक्सेस कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा वापस 6,000 रुपए. टैक्स नहीं है तो ईएटी क्या आएगा, सेम ईबीटी की जितना ही आएगा 6,000 रुपए. दैट इज एन अमाउंट ऑफ 6,000. क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय के ही करेंगे. क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, दैट्स द कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर एन ऑल इक्विटी कंपनी यानी कंपनी वाई का कितना है, इट इज 15%. So value of equity 6,000 divided by 15%. That comes to an amount of 40,000. उसके बाद value of debt X कंपनी का कितना है 18,000, Y कंपनी का कितना है 0 है. फिर हमको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ फर्म. दिस इज एन अमाउंट ऑफ 40,000. और फिर इस 40,000 कैसे है, 40,000 प्लस 0. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है. फॉर वाई कंपनी वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ फाइनेंस. कौन सा, इक्विटी. तो जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही का वही वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा यानी 15%. दिस इज द वे वी हैव टू डू आंसर फॉर कंपनी वाई. तो कंपनी वाई के लिए ऐसा सिंपल वर्किंग होगा. अगेन मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूं एंड विद दैट आई वांट यू टू डू आंसर ऑन योर ओन फॉर कंपनी एक्स. राइट एन आंसर. As per NOI approach, comma, if there are no taxes, comma, then all capital structures are optimal, full stop.
all of them will have same value, comma, same WACC, full stop. With paragraph write down, levered firm will have higher cost of equity because investors of levered firm will have more risk, full stop. Cost of equity of levered firm will increase in such a way so that benefit of raising debt finance is compensated, full stop. ये नोट रीड करो और ये एक्स कंपनी का कॉलम अपने आप फिलअप करो. Now let us have understanding that से कैसे किया जाएगा कैलकुलेशन. Everybody is requested to pay attention. देखो मैंने क्या लिखा है आपको. As per NOI approach, if there are no taxes, then all capital structures are optimal. यानी कि जो चाय वाला चाय में पानी ज्यादा रखता है ना, उसका प्राइस कम होगा, उसका सेल्स क्वांटिटी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा. यानी क्या होगा, दोनों का अल्टीमेटली प्रॉफिट सेम ही रहेगा. All of them will have the same value and same weighted average cost of capital. यानी x का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, x का वैल्यू y के जितना ही होगा, यानी कि 40,000 रुपीज. फिर मैंने क्या लिखा है, लीवर्ड फर्म. लीवर्ड फर्म यानी कि जो कंपनी ने आउटसाइडर्स फाइनेंस रेज किया वो, यानी कि कंपनी एक्स हमारे एग्जांपल में विल हैव हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो जो हम लोग लॉजिकल समझते हैं कि डेट फाइनेंसिंग बढ़ने से इक्विटी शेयरहोल्डर्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, वो चीज हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे. That the equity shareholders will have the more expectation because investors of the levered firm will have more risk. ऐसा उनका मानना है. Okay, so we understand that so the value of the equity will be found as balancing figure, that is an amount of 22,000. कैसे, 40,000 minus 18,000. EBIT सेम रहेगा 6,000 रुपए. Interest will be on 18,000 at the rate of 10%. That is 1,800. तो EBT हो जाएगा 4,200. EAT हो जाएगा 4,200. And importantly friends, cost of equity will be found as balancing figure. तो यहाँ पे cost of equity balancing figure कैलकुलेट किया जाएगा. That is 4,200 divided by 22,000 into 100 to get the answer in percentage though. And the answer comes to 19.09%. ऐसा करके इसको बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया जाएगा.
Now over here देखो क्या लिखा है मैंने, लीवर्ड फर्म विल हैव हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15 की जगह 19 से, बिकॉज इन्वेस्टर्स ऑफ द लीवर्ड फर्म विल हैव मोर रिस्क। लीवर्ड फर्म के शेयर होल्डर्स को रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है इसलिए उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी of levered firm will increase in such a way so that the benefit of raising the debt financing is compensated. We know that से यहाँ पे टैक्स नहीं है, इसलिए कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग क्या होगा 10%। यानी जब भी आप डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या होगा, 15 की जगह 10%। तो आपको क्या फायदा होता है डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करने का, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ता है एंड इट इंक्रीजेस इन सच अ वे सो दैट से आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले के जितना ही रहेगा, यानी कि 15% हमारे एग्जांपल में। लेट अस चेक दैट से इज इट एक्चुअली द केस और नॉट। तो मेथड नंबर 1 उसमें हम लोग क्या करेंगे, विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग एंड देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये टेबल लिख लीजिए पहले, फिर हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं। राइट ऑन दिस टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो मेथड नंबर 1 में लिखो केडी, दैट इज हम लोग कंपनी एक्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। व्हाट इज इनकम टैक्स रेट 0, सो दिस इज 10% itself। then calculation of WACC, source of finance amount, weight cost, weight into cost। सोर्स ऑफ फाइनेंस पे वापस दो, इक्विटी और डिबेंचर्स। दिस इज 18,000, दिस इज 22,000, दिस इज 40,000, दिस इज 0.55, दिस इज 0.45। 22,000 divided by 40,000 और बाकी का 18,000 divided by 40,000। The total is exactly 1। इक्विटी का कॉस्ट 19.09, डिबेंचर का कॉस्ट 10, 0.55 into 19.09, that comes to 10.50। This is 4.5, so overall it is 15। ऐसा करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। और अदरवाइज we can do working like this also। It is EBIT into 1 minus T divided by value of the firm। What is operating income 6,000। What is income tax rate अभी का 0 है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 40,000 इनटू क्या होगा 100 फॉर गेटिंग आंसर इन परसेंटेज। So that comes to 15%। So by either of the way you can compute the answer and it will come to exactly 15%। Friends, in examination you can compute the answer by either of the method, the weighted average cost of capital। So over here we understand that say the conclusion is what already have that is say dictated to you, that there is nothing like optimal capital structure। You increase the debt financing, cost of equity increases to compensate the advantage of raising the debt financing, so weighted average cost of capital will remain same। That is the kind of conclusion that say they have, which I already have dictated to you। Now the diagram heading is NOI approach,
In bracket I'm writing without tax. Okay. On x-axis I'm taking the debt financing. In capital structure. And on y-axis I'm taking the cost of capital. This time I draw one line for you. The remaining two lines you have to draw on your own. मैं आपको एक लाइन जो ड्रॉ करके देता हूं वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का लाइन, आई एम सॉरी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का लाइन. कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लाइन आप ड्रॉ कीजिए, फिर मैं ड्रॉ करके देता हूं. Now friends, again यहाँ पे हमको क्या समझना है, when there is no debt financing at that time cost of equity and weighted average cost of capital are same. यानी सपोज कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं. Now what happens that से वो cost of debt financing के ऊपर ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना. Now we understand that जैसे जैसे debt financing बढ़ता है वैसे वैसे equity shareholders का expectation बढ़ता है. So it goes like this. This is the cost of equity. Now जैसे जैसे debt financing बढ़ता है तो equity shareholders का expectation बढ़ता है and say it will wipe off the advantage of raising the debt financing. तो आपका weighted average cost of capital क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो आपका weighted average cost of capital इतना रहता है. That is what we understand. And this is the diagram that we have. Draw the diagram please. Let us have understanding finally like this. A summary of the working. हम लोग कौन सा सेगमेंट में है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. अगर टैक्स नहीं है तो वो सेगमेंट में हम लोग. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपनी वाई का वर्किंग करते हैं जो अनलीवर्ड फर्म है. उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहता है जो हमने आगे भी समझा हुआ है. ना एक्स कंपनी का कैलकुलेशन ईबीआईटी है, इंटरेस्ट है, ईबीटी है, ईएटी है, वहां तक सेम रहता है. ना इंपॉर्टेंटली जो मैंने आपको नोट लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर डूइंग आंसर फॉर द लीवर्ड फर्म. एनवाई अप्रोच विदाउट टैक्सेस का मानना ऐसा है कि जब भी डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऐसे बढ़ेगा सो एज टू वाइप ऑफ द एडवांटेज ऑफ रेजिंग द डेट फाइनेंसिंग इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. और उसकी वजह से आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतना ही होगा जितना पहले था. आपका वैल्यू ऑफ द फर्म उतना ही रहेगा जो पहले था. इसलिए हमने ये 40,000 को कॉमन रखा हुआ है. वैल्यू ऑफ डेट फाइनेंसिंग 18,000 है. वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग इज फाउंड एज बैलेंसिंग फिगर. अर्निंग आफ्टर टैक्सेस इज 4,200. इक्विटी का वैल्यूएशन है 22,000 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने फाइंड किया जो कि ये 15% से ज्यादा है. एज अ स्टूडेंट व्हाट इज द लर्निंग पॉइंट फॉर यू कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द लीवर्ड फर्म विल बी हायर देन अनलीवर्ड फर्म. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. ये डायग्राम भी मैंने आपको बताया, उसमें आप लोग समझ सकते हो कि आपने डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस किया है, उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रहा है. दिस इज द डेट फाइनेंसिंग and this is the cost of equity which is more than the cost of equity had there been no debt financing. तो advantage of raising the lower cost of the funds is compensated और आपका weighted average cost of capital वही हो जाता है जो पहले था. This is what we understand.